Is it now clearly audible? अभी बराबर है? तो एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर होमोजेनिटी पे बेस्ड सिंगल प्रोडक्ट नहीं लेता है. He always requires multiple products to satisfy even his single want. तो होमोजेनिटी पे बेस्ड सिंगल वांट को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, यही बताया जाता है. मल्टीपल प्रोडक्ट्स के वांट का यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमको कुछ भी बताया नहीं है. Now we describe the last part of the law, importance of the law. Law is important to understand consumers' equilibrium. Because consumer will always purchase the product up to the point where marginal utility of commodity X is equal to price of commodity X. जब तक marginal utility और प्राइस इक्वल है तब तक वो परचेस करेगा. मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है तब तक परचेस किया जाता है. जब भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगा, अ कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग द प्रोडक्ट. मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, द कंज्यूमर वुड बी रेडी टू स्पेंड ₹5. अगर उसको 3 में मिलेगा, विल ही स्पेंड इट और नॉट? अगर उसको यही ब्रेड ₹3 में मिलेगा, विल ही स्पेंड और नॉट? यस, ही विल स्पेंड. बट यही ब्रेड वो उसको ₹7 में मिलेगा, विल ही बाय? नो, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस. A consumer will buy the product only up to the point where marginal utility is either greater than or equal to price. It helps us to understand the consumer's behavior. Then further, useful to the government. The law of DMU is useful to the government to fix welfare policies, taxation policies, etc. ये सारे policies को फ्रेम करने के लिए यूजफुल रहेगा. The law will be useful to frame the various policies. Explain paradox of value. ये बहुत important है. अभी देखो, there are some products, जैसे I can say some here I can say sunlight, water, air, water and sunlight. इन सब का वेरी हाई वैल्यू इन यूज होता है, बट इसके एक्सचेंज में हम कुछ नहीं देते हैं. नो वैल्यू इन एक्सचेंज. वी डोंट पे एनीथिंग फॉर दैट. वैल्यू इन यूज है मगर वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है. तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. यहां से पता चलता है. अभी जैसे डायमंड है या फिर डायमंड नेकलेस है, इनका वेरी हाई वैल्यू इन एक्सचेंज होता है, बट वैल्यू इन यूज इज वेरी लेस. वैल्यू इन यूज इज वेरी लेस. ऐसा डायमंड रहेगा तो किधर यूज करेंगे? बाहर ऐसे लेके जाएंगे जेब में? नहीं, ऐसे ही वो तिजोरी में पड़ा रहेगा. वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेरी हाई, बट वैल्यू इन यूज इज वेरी लेस.
So there is difference between value in use and value in exchange. And that difference between value in use and value in exchange is referred as paradox of value. The difference between value in use and value in exchange is known as paradox of value. Is that okay with all of you? Basis of law of demand. रिमेंबर बहुत सिंप्लीफाइड वे पे मैंने आपको बताया था, अ कंज्यूमर विल डिमांड ओनली दोज प्रोडक्ट विच हैव यूटिलिटी फॉर देम. अगर उनको यूटिलिटी नहीं है तो उस प्रोडक्ट का डिमांड भी नहीं रहेगा. कोई एग्जांपल बताओगे मुझको? मैंने आपको एग्जांपल के साथ में बताया था. रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्ट कॉल्ड एज अनियन. जैन के लिए ऑनियन, वेरी गुड. उसका कोई यूटिलिटी नहीं है तो वो डिमांड भी नहीं करेगा. और महाराष्ट्रियन लेडी का एग्जांपल बताया था, बहुत यूटिलिटी है तो शी विल हैव मोर डिमांड. सो फर्स्ट देयर शुड बी यूटिलिटी, ओनली देन देयर इज डिमांड. अभी जैसे आपके सामने मैंने बताया केक्स. डू यू डिमांड केक्स ऑन रेगुलर बेसिस? रोज जाके केक लेके आते हो? कब लाते हो? व्हेन डू यू डिमांड केक? ऑन स्पेशल ओकेशंस लाइक बर्थडेज, एनिवर्सरीज एक्सेट्रा, राइट? उस वक्त में उसका यूटिलिटी है तब उसको डिमांड करते हैं. अदरवाइज रूटीन में इसका डिमांड नहीं होता है. नो यूटिलिटी नो डिमांड. जब उसका यूटिलिटी होता है बर्थडे या एनिवर्सरी, उस वक्त में उसका यूटिलिटी होता है, उस वक्त ही उसका डिमांड होता है. सो दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ डीएमयू. लर्निंग प्रोसेस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इज ओवर, बट लेक्चर इज नॉट ओवर. ये क्या है, माउस अपने आप बंद हो गया. अभी मैं आपको फिलहाल कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. आई वांट यू टू आंसर दोस क्वेश्चंस. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. में एमसीक्यूज नहीं आए, आप सिर्फ चैप्टर आया. चैप्टर पूरे यूनिट में पीछे रहेगा. मिल गया. मैंने इधर कर दिया ओपन, रहने दो आप. Okay, let us discuss some questions related to consumers' behavior.
Okay. When total utility is maximum, marginal utility is dash. 0. Very good. Marginal utility decreases from dash unit of consumption. From the first unit of consumption. फिर at higher prices, people demand more of certain goods, not for their worth, but their prestige value. This is called dash effect. At higher prices, people demand more of certain goods, not for their worth, but for their prestige value. Is called dash effect. ये नाम मैंने कभी आपको बताया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? दैट इज कॉल्ड वेबलेन इफेक्ट. VEBLE. वेबलेन इफेक्ट. याद रखो. Then the consumer will buy the product if the price is greater than utility. True or false? False. तो कंज्यूमर कब तक बाएगा? कब तक बाय करेगा कंज्यूमर? When the total utility is either equal to or greater than price. ये भी बोलना भूल. Utility should either be greater than or equal to price. Utility जब price से कम हो जाएगा, तब the consumer will not buy that product. Negative utility indicates dash. This utility is the correct answer. Utility is a subjective concept, indicates A, it differs from person to person, it differs from time to time,
It differs from product to product, all of above. The correct answer is D, all of above. Subjective में सब आ जाता है. Once the point of satiety is achieved, consumption of additional units of a commodity result into both total utility and marginal utility to increase. Total utility will fall and marginal utility will decrease. Or total utility declines, marginal utility becomes negative. The answer is C. Very correct. Marginal utility approach was popularized by Dash. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. वेरी गुड. मतलब आप MCQs के आंसर दे सक रहे हो. इट इंडिकेट्स दैट यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स. ओके, so let us conclude with our session for today. In our next lecture of economics, we'll start with new chapter. Bye for now.